If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Hello everyone, this is Priya Chetri and welcome back to my YouTube channel. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ how to edit your picture in Lightroom app. Now I have iPhone and iPhone में बहुत प्यारे प्यारे फिल्टर्स हैं जो आप अपनी पिक्चर्स में लगा सकते हो and it will change your picture completely and make it more beautiful. But then I thought कि सबके पास iPhone नहीं होता है, सबको iPhone यूज करना पसंद नहीं है. So I thought कि चलो कुछ figure out करते हैं and let's try to make this filter in normal सा app जो सबके पास available हो like Lightroom. So yeah, I just figured out one filter from the iPhone that's called dynamic and it looks like this. So yeah, आज के वीडियो में मैं आपके साथ इसी iPhone फिल्टर का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ and आज से आप ये वाला फिल्टर आपके पिक्चर्स में भी यूज कर पाओगे even if you don't have any iPhone. like आपको iPhone की जरूरत नहीं है. So yeah, I'm very excited. I hope आप भी excited हो. अगर हो then hit the like button and make it like 1K so that we can make more part of this video. So yeah, hit the like button and now let's get started. So to get that filter, this is how you have to edit your picture in Lightroom app. So the first option we have light and light के अंदर we have the option exposure. ना यहाँ पे exposure का जो amount है वो मैं decrease करूँगी because we don't want any light in our picture. And then we have the option contrast and यहाँ पे मैं इसका amount increase करूँगी. Now मैंने अपनी ज़्यादा videos में आपसे share किया है कि जब भी आप exposure का amount increase करो then you have to also increase the amount of contrast because they go hand in hand, but in this picture they will go opposite. like आपको एक्सपोजर का अमाउंट डिक्रीज करना है एंड कॉन्ट्रास्ट का अमाउंट इंक्रीज करना है. नाउ देन वी हैव ऑप्शन हाईलाइट, शैडो एंड वाइट जिसका अमाउंट आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज करना है. टोटली डिपेंड्स ऑन योर पिक्चर. एंड देन वी हैव ऑप्शन ब्लैक जिसका अमाउंट आपको डिक्रीज करना है एंड यू विल डेफिनेटली सी अ लिटिल बिट डिफरेंस ऑन योर पिक्चर. नाउ देन वी हैव द ऑप्शन कलर जहाँ पे आपको सबसे पहले जाके सैचुरेशन का जो अमाउंट है डिक्रीज करना है एंड यू कैन सी अ टोटल डिफरेंस इन योर पिक्चर एंड दिस इज हाउ वी कैन गेट दैट फिल्टर. एंड यहाँ पे सैचुरेशन का अमाउंट डिक्रीज करने के बाद यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टैम्प, टिंट एंड वाइब्रेशन. Now overall this color option is the main part to get that filter and यहाँ पे इन तीनों फिल्टर का अमाउंट आपको उतना इंक्रीज करना है जब तक आपको वो फिल्टर का इफेक्ट आपके पिक्चर में ना मिल जाए. एंड जैसे ही आपको कलर फिल्टर्स के अमाउंट परफेक्टली मिल जाएंगे देन यू विल ऑल्सो गेट दैट फिल्टर इन योर पिक्चर लाइक इन मिनट्स. Now the next option we have is effect. Now this is like a touch up to your picture where you will increase the clarity and the texture of your picture. And the amount of DHS totally depends on your picture. If you increase it and it will make your picture more beautiful then you can definitely increase it. Otherwise just skip it because we already get our filter. So yeah, this is how you can get that filter. Now I will save this picture and again I will edit this picture in pixat app. So यहाँ पे I will just remove unwanted things on my skin and I will make my picture more beautiful. So ये totally optional है. अगर आपको करना है then you can do it, otherwise just leave it. So यहाँ पे I will choose the option beautify and then I will choose the option blemishes and I will just remove all the blemishes from my skin and then I will choose the option smooth जो मेरी skin को पूरा smooth कर देगा. And yeah, that's it. I will save this picture and this is how the final picture look. In the drive-thru, order my food. Let's stay up all night. Let's pretend we're alright. In the drive-thru, I'm in love with you. Now I know what Now if you don't want to do this tamjham and you are looking for a shortcut then I have put the shortcut link in the description box below. So go and check it out. वहाँ पे आपको इस फिल्टर की लिंक डायरेक्टली मिल जाएगी एंड उस फिल्टर को आप डायरेक्टली आपके पिक्चर्स पे यूज कर सकते हो. So go and check it out. So guys, that's all for today's video and I really hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो एंड इनमें से कुछ भी लगा हो then hit the like button and subscribe to my channel and also comment down below your feedback about this video and also please follow me on my Instagram and yeah, thank you for watching my video. I will see you next time. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.
That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have